Hello students, today in module 2 we solve the questions based on single phase AC circuit. The first question is calculate the maximum and the RMS value of 10 sin omega t minus 17.3 cos omega t. To find the maximum and the RMS value, what we should know that I is equal to Im sine of omega t. If we know this value, then from this Im we can find out the maximum value, and to find the RMS, that is IRMS is equal to Im by root 2. So we have to convert this into this form. Okay, so for this what we have done, 10 sin omega t minus 17.3 cos omega t, ये हमें कैसे लग रहा है, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी के फॉर्मेट में, या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. सो वी कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म. तो हमने क्या किया, वी टेक 20 एज कॉमन, राइट. सो 20, so this will be 1 by 2 sin omega t for this term. Next 17.3 cos omega t, so this is sin, this is cos, so root 3 by 2 cos omega t means root 3 by 2, 220 cancel होगा, then you will get root 3 into 10, so you will get 17.3. so when you solve this, it's 20, what is 1 by 2, it's cos of pi by 3, root 3 by 2, it's sin of pi by 3. So this is pi by 3, this is sin pi by 3, तो ये क्या हो जाएगा, sin a minus b. So 20 sin a minus b you will get. Okay, so when this is 20 sin a minus b, तो क्या हो गया, this maximum value it is similar to what, it is similar to I maximum, right, Im. So this is the maximum value. Now to find the RMS value, क्या होगा, IRMS is 20 by root 2, 14.4. So this is the way to find out this question. Next question. Find the average and the RMS value of current I is equal to 10 plus 10 sin omega t. Okay, so I is equal to 10 plus 10 sin omega t. So this is the form of I is equal to 10 plus 10 sin omega t. तो क्या हुआ, 10 1 plus sin omega t, तो 10 into 1 plus sin theta. तो sin theta को हमने theta is equal to 314 ले लिया हमने. So 10 1 plus sin theta. Okay, can we find out the average value from here? Yes, we can find out the average value from here, because I is equal to this constant value plus 10 sin omega t. This 10 sin omega t, this part, the average of this part is 0. Okay, so we can directly write down this I is equal to 10, this is the average value of the current. Okay, next is you go further for this 10 plus sin. To find the RMS value क्या करना होगा, I square हमें पहले चाहिए होगा. Okay, because what is the RMS, IRMS is under root of integration of this part, this whole part, integration of this whole part. Okay, तो हम क्या करेंगे, we simplify this I square is equal to 100 plus 200 sin theta plus 100 sin square theta, square कर दिया इसका. Again you simplify this, then you will get this value. Now you integrate this I. So I RMS square is under integration of 0 to 2 pi for the whole cycle. RMS के लिए क्या करना होता है हमें, whole cycle करने का. तो I square d theta upon 2 pi. Okay, so you integrate this, when you integrate this you will get 150
प्लस 200 साइन थीटा माइनस 50 कॉस थीटा को इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिल रहा है 150 इंटू थीटा माइनस 200 साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया 50/2 साइन 2 थीटा. What is the range? 0 to 2 pi. When you simplify this, you will get this. This is the value of, ये किसकी वैल्यू है I RMS स्क्वायर की. हमें क्या चाहिए I RMS चाहिए, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रूट लेना पड़ेगा. So when you take this, the root of this, you will get I RMS is 12.24. Okay. I average, I already told you this I average is 10 ampere. Next question. A sinusoidal AC of frequency 25 Hz has a maximum value of 100 ampere. How long will it take for the current to attain the values of 20, 50 and 100 ampere? यहाँ पर एक चीज़ आपको मैंने पहले बताई थी कि जब तक आपको बताया ना जाए कि कौन सा करंट है तब तक हम उसको RMS लेते हैं, बट यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 100 एम्पियर. सो दिस 100 एम्पियर इज योर I maximum. Okay. What next? How long will it take? How long will it take to attain values of 20, 50 and 100 ampere? Okay. तो 20, 50, 100 ampere. How long means क्या करना है उसका, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम फॉर दिस, राइट. तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. ओमेगा इज 2 पाई एफ, सो इट इज 2 पाई एफ टी. पुट द वैल्यूज, आई एम इज 100 एम्पियर, एफ इज फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज दिया गया आपको, राइट. एंड अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस फॉर दिस 20 एम्पियर. दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू दिया गया है, आपसे पूछा गया है एट फाइंड द टाइम व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट इज 20 एम्पियर. सो इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट. सो आई इंस्टेंटेनियस इज 20 एम्पियर. सो पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, put the values in this equation, you will get 20 is equal to 100 sin 2 pi ft. So what is pi? I think all of you tell me this. Pi is 3.14, but here the pi is not 3.14 because the pi is related to the sine wave. Okay, this sine wave. So here pi is related to the pi 2 pi. So this is pi is 180 degree. So put the value here, pi is 180 degree. 0.2 sine inverse 0.2 is 11.5. So t is equal to 0.0012 second. So to attain the value of 20 ampere, it takes this seconds. Clear? Now for the second, to attain the values of 50 ampere. So now instantaneous value of the current is 50. Okay. So to attain the value of 50 ampere क्या करना होगा हमें, 50 100 sin omega t. Omega is 2 pi f t. 2 pi f is 50 and t. Okay. Again put the value of pi is 180 degree. So time is 0.0033 second. Similarly for 100 ampere, you find the time. So when we are talking about the instantaneous values, be careful, you have to take this in pi as 180 degree. Okay. The next question, a 50 Hz sinusoidal voltage wave shape has a maximum value of 350 volt. Calculate its instantaneous value. A 0.005 second after the wave passes through 0 in the positive direction. B 0.008 second after the wave passes through 0 in the negative direction. Okay. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू निकालनी है. क्या क्या दिया गया आपको, द फ्रीक्वेंसी, दिस इज 50 हर्ट्ज, राइट. देन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज 350 वोल्ट. ये वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है, Vm. Okay.
कैलकुलेट इट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब टी दिया गया है, तो f इज 50 हर्ट्स, मैक्सिमम वैल्यू इज 350 वोल्ट. पुट द वैल्यू v इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी. इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है कब, इट्स टाइम पर. सो 350 साइन 2 पाई एफ टी, again pi is 180 degree. You simplify this and you will get the V, instantaneous value of V is 350 volt in the positive direction, that's why this is positive. In the negative direction now, time is 0.008 second. Put the values in this. V is equal to Vm sin omega t, so you will get the V is equal to 205 second. Okay, 205 second. This is the value of voltage at 0.0. but you want to know that in the negative direction means जब आपकी wave shape negative direction में जा रही है, at that time what will be the value, this V is negative, so that's why we write this minus of 200.57 volt, right? Okay. Next, a capacitor of 100 microfarad is connected across a 200 volt 50 hertz single phase supply. Calculate the reactance of the capacitor, the RMS value of the current and the maximum value of the current. Reactance of the capacitor means, reactance क्या होता है, capacitive reactance, that is XC. What is XC? X is 1 upon omega c or 1 upon 2 pi fc. Okay, so we have to find out the 1 upon 2 pi fc. Put the values. It's 100 microfarad. क्या हम 100 माइक्रोफैराड को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? नहीं. फर्स्ट यू कन्वर्ट दिस 100 माइक्रोफैराड इनटू फैराड. सो इट इज़ 1 अपॉन 2 पाई 50 100 10 स्क्वायर. अब यहाँ पर पाई क्या रखेंगे आप? अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें पाई क्या ले रहे थे हम लोग? 180 डिग्री. बट यहाँ पर पाई क्या लेंगे हम लोग? 3.14, बिकॉज नाउ इट इज़ नॉट कंसर्न विद द टाइम. ओके, पुट द वैल्यू and you will get 31.8 ohm. Next is the RMS value of the current. So what is the RMS value of the voltage? This is 200 volt. फिर से वही बात आ रही है कि यहाँ पर आपको वोल्टेज जो दिया गया है, that voltage is voltage across is 200 volt. यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि ये 200 वोल्ट कौन सा वोल्टेज है. जब तक मेंशन नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग क्या मान के चलेंगे वो कौन सा वोल्टेज है? ये जो वोल्टेज है कौन सा वोल्टेज होगा? RMS value of the voltage. So when you have the RMS value of the voltage and you use this RMS value, it means you will get the current. That also will be RMS value. So RMS value of the current is V upon XC, 200 upon 31.8. So you will get current I is equal to 6.29 ampere. What is the maximum value of the current? I maximum, that is I under root 2. So it's 8.78 ampere. Okay, thank you.